BNTV ইউকের উদ্যোগে হতে যাচ্ছে রান্না বান্নার বিশেষ প্রতিযোগিতা কুকিং চ্যালেঞ্জ 2025। 12 জানুয়ারি রোববার সন্ধ্যা 6টায় বার্মিংহামের আস্টনের ইকবাল বাংকুটিং হলে। থাকছে 4 ক্যাটাগরি: পিঠা, ভর্তা, মেইন ডিশ আর ডিজার্ট। প্রতিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়কে দেওয়া হবে আকর্ষণীয় পুরস্কার আর বিশেষ সনদপত্র। বিচারক হিসেবে থাকবেন ব্রিটেনের মূলধারার সেলিব্রিটি নানা শেফ। পুরো আয়োজন সরাসরি সম্প্রচার করবে BNTV ইউকে। কুকিং চ্যালেঞ্জ 2025 এ অংশ নিতে আগ্রহীরা আজই যোগাযোগ করুন। ফোন 07889201811। বার্মিংহামে কুকিং চ্যালেঞ্জ 2025। Accident and Injury Associates. No win, no fee. Make the right choice. One of the best service providers in the UK. 25 years of impartial service provider. Offers replacement vehicles nationwide. Complete accident management solutions. Contact us 07814 700 252, 0121 328 2929 or email accidentinjury@live.co.uk. Assalamu alaikum and good evening. Welcome to Health is a Wealth show. Ami consultant podiatrist SOMUZ MIAH, host of this show. Asker topic hoibo gari duita sectioner topic. Ekta hoibo gari diabetic foot and musculoskeletal problem of the lower limb. Amar সাথে আছেন আমার দুইজন colleague, distinguished guest. Thara both podiatrist. Podiatrist basically mean foot doctor or foot doctor, and it depends on what part of the world is. Many people use many type of titles. Before we introduce them, amar kichu disclaimer ase. Disclaimer hoilo gari, this is a live show. In live show, we can make a mistake or unknowingly say something. Therefore, itar apnara komar drishtike dekhbay. So, if we have said something or unknowingly, please don't hold us to that account and please do forgive us. So anyway, I will introduce my colleagues one at a time. Obviously, tara nije tara introduce korba. Ekjon colleague amar tain bala Urdu janoin. Inshallah, tain Urdu te jo korba ki whatever question I ask him, he'll try to explain you as much as he can. So I'd like to welcome first my colleague who is a podiatrist consultant as well, Abid Hussain. Assalamu alaikum bhai. Wa alaikum assalam. How are you? All yours. I'm well. My name's Abid Hussain. I'm from the Dr. Foot Podiatry Clinic. I'm a consultant podiatrist and I have been for a very, very long time, almost 30 years now, and I'm honored to be on the show. Thank you. Thank you. And next is my other colleague. He is an advanced practitioner. Assalamu alaikum Tousif. How are we? Alhamdulillah. So if you want to explain yourself, who you are and what you're doing. Well, मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ है और मैं द पेडियाट्रिक क्लिनिक रन करता हूँ। तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है डायबिटीज़ में। I worked in the hospital for some time with diabetic feet and musculoskeletal. Excellent. Thank you very much. Let's kick off, right? আজকের যে টপিকটা diabetic foot. Diabetic
in our community, it's quite high, isn't it? Okay, and what do you think as well, diabetic foot in our community? So, बात तो ये है समझ I'll ask you a question then. What are the cause of diabetic foot in our community? So, especially हमारी community में जो पाकिस्तानी, बंगाली और Indian community में, we love our sweet food. We love our samosas, pakoras, and we've seen diabetes in our communities like pandemic levels. We've seen it in the Bengali community, in the Pakistani community, and in the Indian community. And it's mainly driven from diet, mainly from we have a really poor dietary habits. We also are not moving much now. Everybody's got one car or 4 cars in the house. Nobody likes to walk anywhere. So back in our parents' generations, people used to walk. Now nobody walks anywhere, and we have this pandemic levels of diabetes within our Asian communities. So, I mean, those two main things are the reasons why we love our gulab jamun, don't we? We love our gulab jamun. The cause of it, basically. Yes, exactly. Thank you. Tousif, by yourself, how does neuropathic and post-circulation affect diabetes? I'd like to actually मुझे ना एक डॉक्टर साहब की बात से मुझे एक स्टोरी याद आ गई है कि मैं सैंडवन में काम करता था, तो हमारे काफ़ी ज़्यादा पेशेंट थे जो इंडियन कम्युनिटी से, पाकिस्तानी कम्युनिटी से और बांग्लादेशी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो मैं उनसे ये नहीं पूछता था कि आप चीनी खाते हैं या नहीं खाते, मैं उनसे ये पूछता था कि आप गुरुद्वारे जाते हैं या नहीं जाते, बिकॉज मुझे पता था जब वो गुरुद्वारे जाते हैं एंड दे हैव प्रसाद, दे हैव लॉट्स ऑफ स्वीट फूड्स, और जब उनसे ये पूछो कि आप चाय पीते हैं, तो मैं चाय तो बिल्कुल चीनी के बगैर पीता हूँ, बट अदरवाइज दे ईट एनीथिंग स्वीट। तो आपका सवाल जो था उससे आते हुए neuropathic. Neuropathy. Yeah. What is a neuropathy? So neuropathy is कि जब आपके पाँव में फीलिंग ख़त्म हो जाती है या चेंज हो जाती है, जब आपको ठंडा गर्म जो है अनयूजुअल लगने लग पड़ता है, जब आपके पाँव में फीलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जब आप किसी चीज़ पे पाँव रखते हैं और आपको फीलिंग नहीं होती, पता नहीं चलता कि आपने किसी सख्त जगह पे पाँव रखा है। हाइपर सेंसिटिविटी भी हो जाती है कि आप का पाँव जो है वो रात को आप लेटे हुए हैं और आपका पाँव जल रहा है, आपने सॉक्स पहनी है, जो काफ़ी ज़्यादा हमारे पेशेंट हैं एशियन कम्युनिटी में, वो सॉक्स नहीं पहन सकते, वो जूते नहीं पहन सकते, वो ओपन खुले सैंडल्स पहन के रखते हैं, जो रिस्क फैक्टर है उसके लिए कि अगर आप फीलिंग नहीं कर रहे, आपने खुले जूते पहने हुए हैं, आपने किसी शार्प चीज़ के ऊपर पाँव रख दिया, तो उससे क्या होता है कि आपका डैमेज होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो डायबिटीज़ में हमें पता है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी काफ़ी अफेक्टेड हो जाती है, तो पाँव में खून जाना जो है उसका दौरा जो है वो बहुत महदूद हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप खुले पाँव चल रहे हैं, आपको फीलिंग नहीं हो रही, आपने किसी शार्प चीज़ पे रखा है, आपका पाँव डैमेज हो गया, तो डैमेज के बाद अगर उधर खून नहीं जाएगा तो वो हीलिंग नहीं होगी। Absolutely. Thank you. Anything you want to add? Absolutely. First of all, thank you, Tousif, for that brilliant description of diabetes in Urdu. Definitely, and people will not believe that in Bangladesh and India and Pakistan, the amount of amputations that occur because of neuropathic feet. So neuropathy basically means that you've lost sensation in your feet. It normally starts off with like you got burning sensation, pins and needles, then it starts to go numb, and then as Tousif said very, very well, that you can cause damage to your foot and you will not realize it. So I know from when we've done clinics in Pakistan where some men, and this will be the same case in Bangladesh as well, a man is sitting on a motorbike and he will burn the side of his foot because of the exhaust is really hot. He wouldn't even realize he's burnt it. And that can then become an infection, etc., etc. Or in the really hot summer months in Bangladesh and India and Pakistan, they will step onto the marble floor and burn the soles of their feet and not realize that they've burnt the soles of their feet. So that type of neuropathy is no good. Now, pain is a good thing. People don't think that pain is a good thing. Pain is a protective thing.
And if you have no pain in your feet, it can lead to some serious consequences. থ্যাংক ইউ আমার কলিগে যেটা কইতে চাইরো আমার কলিগে কইরো কি যে নিউরোপ্যাথিকের আমরা যে টাচ করি এটা আমরা লুজ করি লাই অথবা আমরা নিউরোপ্যাথিকের কোনো সময় আমরা পেইন ফিলিং করি না নিউরোপ্যাথিকে অনেক সময় ব্লিস্টার হইতে পারে কিন্তু পেইন ওটা বালা পেইন হইলে কি অ্যাটলিস্ট মনে করলাই যে সেন্সেশনটা কিছু আছে basically that's what my colleague is trying to explain. Now let's go back to the how can we treat. Before we go to treatmented অনেক ধরনের ট্রিটমেন্ট আছে আমি আমার কলিগ বলতে চাইমু বাট ডায়াবেটিকের আমার পয়েন্ট অফ ভিউ কি তিনটা মেইন ফ্যাক্টর আর তিনটা মেইন ফ্যাক্টর হইল গিয়ে অ্যাবসলিউটলি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হইল গিয়ে চোখ কিডনি অ্যান্ড ফুট এই তিনটা জিনিসে ডায়াবেটিকে এফেক্ট করে বেশি নাও I'm going to ask Tousif a questions on treatment. What are the most effective treatment of diabetic foot ulcers? समझ भाई डायबिटिक फुट अल्सर्स में तकरीबन 5 साल जो है वो मैंने ना सेंट्रल हॉस्पिटल में डायबिटिक फुट अल्सर्स जो है वो ट्रीट किए उसमें जो हमारी कम्युनिटी है जो हमने एक्सप्लेन किया कि जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसी को आपने अनपिक करना है सो अल्सर्स की वजह न्यूरोपैथी बैड सर्कुलेशन सो सबसे पहली चीज़ है कि आपने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है जब आपने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हीलिंग के लिए आपको जीपी एमडीटी टीम और जो पेडियाट्रिस्ट है वो बड़ा अहम रोल अदा करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको ज़ख़म हो गया तो उस ज़ख़म को ट्रीटमेंट आपने जितनी जल्दी हो सके आपने जाना है अपने जीपी को देखना है जीपी प्रैक्टिस नर्स पेडियाट्रिस्ट जो आपका है डायबिटियोलॉजिस्ट ये सारे इकट्ठे होके आपके पाँव को जो है वो करेंगे उसमें ट्रीटमेंट्स में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं उसमें ड्रेसिंग्स आ जाती हैं उसमें डिब्राइडमेंट आ जाती है कि अगर वूंड जो है इन्फेक्टेड हो गया उसके आगे पीछे काफ़ी हार्ड स्किन डेवलप हो गया उसको उतारना पड़ेगा उसको काटना पड़ेगा फिर उसके बाद उसके ऊपर जो ड्रेसिंग्स हैं वो डिपेंडिंग ऑन इन्फेक्शन वो करनी पड़ेंगी अगर इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी एडवांस हो गया तो डॉक्टर्स जो हैं वो आपको एंटीबायोटिक्स देंगे उसके अलावा आपके फुटवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑफलोडिंग उसको किस तरह आपने ज़ख़म से वज़न को उतारना है ताकि वो टिश्यू जो है वो हील करना शुरू हो जाए इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो क्लिनिशियंस ने आपके लिए करना है वो तो बहुत लिमिटेड है बंदे इसको घर पे जाके उसका किस तरह कितना अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है Thank you. Abid bhai, same with you. Is there anything you want to ask? I'm going to ask you one question as well. Oxygen therapy. Have you heard of that? I've heard of it. I'm not personally familiar with it. Okay, so I've seen in Bangladesh, one of my relative had oxygen therapy. In this country, I haven't seen many. No. So in Asian subcontinent, oxygen therapy is huge, and his foot was put into a oxygen chamber like. Yes. And I've seen it. Its evidence is there. So and it's because it's hospitalization down there. All three of us got our own clinic, private clinic. I don't think so we could put oxygen therapy there. But the machine is not bad. It's portable. So that's one thing. Next thing is, like Tousif explained us about the treatment with many like dressing, shoes, socks. Anything you want to add? So, I want to add a little bit and maybe explain a little bit. So, some people may not understand what is a diabetic ulcer. So, an ulcer is essentially an infection. It's an infection that has gone past a few layers in the skin and it's not healing. And there's some very specific characteristics to an ulceration, which I'm not going to go into in detail here. The main thing I would say is prevention is better than treatment. Tousif described very, very well in Urdu how you would treat it. You would visit a podiatrist. He or she would take off the hard skin. We would offload it with special shoes or padding and give you antibiotics. And we would get multidisciplinary team involved like a dietitian. But the most important thing I have to state is you have to try and make a conscious effort to look at your feet every day, especially if you're a diabetic.
if you get the smallest blister, you need to treat that effectively so it doesn't become a ulceration. Because once you've had your first ulcer, SOMUZ MIAH, it becomes very difficult. Okay. Very, very difficult. 1 minute, then I'll just say what my colleague said was that ulcer একবার হয়ে গেলে নানি ইটারে ট্রিটমেন্ট করা ভেরি ডিফিকাল্ট আর আরেকটা জিনিস আমরা মানছি অ্যাবাউট অক্সিজেন থেরাপি আমি বাংলাদেশে আমার আইতো একজনে তাই ডায়াবেটিক ফুটের ট্রিটমেন্ট বাংলাদেশে আমি এটা দেখছি ভেরি এফেক্টিভ অলসো শু ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যাই আমার কলিগে কইছে শু প্রোটেকশন দেয় আলসারে অথবা ফুটরে ইটসেলফ আর বিভিন্ন ধরনের ট্রিটমেন্ট আছে আপনারা যদি ক্লিনিকও যান ক্লিনিকও গেলে যে ক্লিনিশিয়ান এখানেও ডায়াবেটিক ফাওয়ের যে ট্রিটমেন্টটা খালি এক ফুড ডক্টর অথবা পেডিয়াট্রিস্ট নাই ইটস মাল্টিডিসিপ্লিন মেনি আদার প্রফেশন নাকি এখানে মাঝে ইনভলভ আছে বেসিকলি ডায়াবেটিক নার্স আছে ডায়াবেটিক ডক্টরস আছে ইভেন সার্জনস ও ভাস্কুলার সার্জন মানে ডায়াবেটিক ফুটের কমপ্লিকেশন এত অ্যাডভান্স হইতে পারে অথবা কুইকলি ডিটেরিয়েট হইতে পারে এর দায় মেনি প্রফেশনাল এটা ইনভলভ হয় Anything you want to add? I just told that it's need No, many professionals. I think you've covered everything. Okay, thank you very much. And now let me go to prevention. যে আমরা এটারে কিলা prevention করতাম পারি. So I would ask Tousif again. So what are the best daily practice on preventing diabetic ulcers or diabetic foot problem or complication, whatever you want to call it? Yeah, I think जो स्टार्ट है वो इसी चीज़ से है कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल करें। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपने अपनी शुगर को कंट्रोल करनी। जब आपकी शुगर कंट्रोल होगी बाकी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आती जाएंगी। अगर पाँव के लिहाज से देखें कि अगर आपने ज़ख्मों को पाँव को किस तरह बचाना है, नंबर पहली चीज़ कि आपने अपने पाँव डेली चेक करने हैं। अगर आपको कोई उसमें से ऐसी चीज़ नज़र आती है कि कोई छोटा सा कट लग गया, ब्लिस्टर आ गया, कोई ज़ख़म हो गया, कोई रेडनेस आ गई है कि किसी जगह पे कहीं जूता रब कर रहा है, तो आपने उस चीज़ को इजी नहीं लेना, लाइटली नहीं लेना, आइडेंटिफाई करना है और उस चीज़ को आपने रिमूव करना है। दूसरी चीज़, जब आप पाँव धोते हैं, साफ़ करते हैं, हम लोग इन बांग्लादेश काफ़ी जो कम्युनिटी हमारी जो सुनने वाली है वो मुसलमान है, तो उसमें जब आप वज़ू करते हैं तो इन बिटवीन द टोज़ आपने जो है उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई करना है। बिकॉज़ इन बिटवीन द टोज़ आपको एथलीट्स फिट हो जाता है, उससे आपको ज़ख़म होने शुरू हो जाते हैं, तो उसका आपने काफ़ी ध्यान रखना है। उसके अलावा जो है आपने पाँव डायबिटीज़ की वजह से आपका पाँव जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। जब आपकी हील्स ड्राई होती हैं तो जब वज़न पड़ने की वजह से वो क्रैक हो जाते हैं, तो आपने क्रीम जो है नॉर्मल क्रीम जो फेस पे लगाते हैं वो नहीं लगानी है, आपने स्पेशली फुट क्रीम लेके आनी है। तो वो फुट क्रीम आपने लगानी है जिसकी वजह से आपके पाँव की, आपकी स्किन की इंटेग्रिटी जो है वो काफ़ी अच्छी रहे और वो ब्रेक डाउन ना करे। I think I can go on and on. Yeah, but we just like মানে আমার কলিগে কইছেন যে এটা অনেক জিনিস আমরা আজকের এক আধা ঘন্টার ভিতরে কি এটা সম্ভাবনা নাই সফলতা যখন বেসিকলি যে অলসো আরেকটা জিনিস আপনারা খেয়াল রাখবাই খালি পায়ে যেন আটুন না, রাইট? খালি পায়ে আটলে স্পেশালি যারা ডায়াবেটিক, যারা নিউরোপ্যাথিক প্রবলেম যদি থাকে এতে কোনটা যদি হামায় এটার ফিলিং হইতো না। স্মোকিং একটা প্রবলেম আছে, সুগার লেভেল কন্ট্রোল করা, তখন আরো বিভিন্ন আমি আমার কলিগ আবিদ হুসাইন গেছে এনিথিং এলস ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড অন প্রিভেনশন? Let me add a few more different things. So number one, footwear, especially in our Asian community, especially with the females, you need to be a bit careful. So if you're a diabetic, type 2 diabetic, type 1 diabetic, and you're wearing chappals that are going to rub on your feet, that could be a problem, and that can lead to a diabetic ulceration, worst case scenario. So be very careful with your footwear. That's the first thing. Number two, as Tousif talked about very, very well, make sure that you dry in between your toes, make sure you don't have any cracks on your heels, use a moisturizing cream. Finally, in these winter months, diabetics, please don't put hot water bottles on your feet.
please do not put your feet against a radiator. Can I just এটা very important আমার কলিগে কইছেন ই উইন্টার মাত্রনানি radiator উপরে ফাউ থইবাই না hot water bottle দিবাই না. Yes, absolutely. You can develop another condition called chilblains, which is when your toes go really purple and gets very itchy, very painful. Now, in a diabetic, if that chilblain breaks down and you get an ulceration, an infection, we could potentially have quite a big problem. So you want to try and prevent these types of issues. But as Tousif and SOMUZ MIAH talked about, prevention is the main thing. So if it gets to the point of treatment, then we've got a problem. So do these daily practices every day, and also control your diet and everything else, so your sugar levels are not peaking up and down like a mountain. Thank you. One burning question I want to ask Tousif, and it's absolutely relevant to our community, is that currently, as you, both of you from Muslim background, as you are aware, that a lot of us are nowadays going to Umrah. Yes. Right? Umrah and diabetic foot. Can you please explain? That is the $64,000 question. Actually, आज ही मैंने पेशेंट देखा है कि जो उम्र पे गया हुआ था, जो वापस आया और उनकी एड़ी में दर्द है, और दूसरा ये है कि उन्होंने जब बेयर फुट उधर चलते रहे, उसकी वजह से उनकी जो एड़ियाँ हैं वो फट गई हैं. तो मैं बंदों को ये एडवाइस दूंगा कि उन्हें ये चाहिए कि जब अपना पाँव का ख्याल रखेंगे, क्रीम लगा के रखेंगे, उसका जो है जो जूते पहनने हैं उनका ख्याल रखेंगे. हम ऑफ कोर्स अंदर जाके हम नहीं जूते पहन सकते, तो सॉक्स जो है थोड़ी मोटी वाली सॉक्स पहन के रखें. आजकल तो वो जेल हील वाली सॉक्स भी आ जाती हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी जेल की जो पैडिंग है वो मिल जाएगी. बिकॉज़ मैं पिछले साल मैं उम्रे पे गया था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन मेरी एड़ियाँ और मेरे पाँव जो है वो दर्द करने लग पड़े थे. As a foot doctor, even you, even I didn't realize that. I think both of you here, isn't it about time now? I was thinking of that. There is people when they go to Hajj, when they go to Umrah, I think it's fallen to a profession like us. We should have some sort of seminar on saving food when they go to Hajj, when they go to Umrah, because regardless whichever month they go, still temperature is hotter than here, regardless, right? So I think in future we should, as a podiatrist or Muslim podiatrist, or forget Muslim, even going to India, people go to Kumbela and all this stuff. Any religious part of the in the world, whichever religion you're from, even if you're from Catholic, you go to Rome, which is hot, by the way. So I think as a podiatrist, on the point of going for pilgrimage, I think there should be some sort of educational package for diabetic and normal foot, because it's not only about diabetic foot. খালি তো ডায়াবেটিকের ফুটের কোনো প্রবলেম যায় না, হজর টজর গেলে যারা নরমাল তারারও ফুট প্রবলেম হইতে পারে. So what do you think, both of my colleagues, on that respect in future? So first of all, some people may not understand that much depth in Urdu. So when he says eri, he's talking about heels. So so those of you are my Bengali brothers and sisters who don't understand eri, it means heels. So let me rewind this a little bit more. I think Hajj and Umrah, obviously people should definitely get a checkup. But if you are a person that doesn't normally walk that much and you're going to Bangladesh, Pakistan and India and you are about to walk a lot, it would be a good idea to get your foot checked up before you go on a holiday where you're going to be doing 20 to 30,000 steps a day and you normally do 5,000 steps a day. A quick checkup is a good idea. So that would be a really beneficial thing, and it can prevent a lot of issues. Thirdly, if you've got quite flat feet and you're going to a warm country, like you're going on Hajj and Umrah, or you're going to somewhere in Bangladesh, India and Pakistan, you can get orthotic sandals. You can get sandals that have an arch support built into it. You can buy these over the counter. You can buy them from Amazon, and they will be really helpful because it will prevent your heel pain. It will prevent a lot of other issues that you may get.
So that's something worth considering. Well, I'll give you a bit of tip then. My colleague Dr. Foot, he's got a website called Dr. Foot, and you'll find a sandal. Hopefully, we probably cannot in future. We probably call it Hajj sandal, but we can't name it. I think you need permission from Middle East or whatever. But anyway, he's got a website called Dr. Foot. Before we finish up with diabetic foot, because diabetic, as I said, we can go on. I'm on and on kortam parmo. Kintu diabetic, absolutely important. Bochoro, at least twice, dui bannani, podiatrist gese check-up kora hoilo very important. Just like under the eyes, we go to the optician every year to have our eye checked. I believe amar je qualification hai ba amder colleague hall e fielder mazaki at least once a year diabetic foot check. Diabetic foot check is important. Onek colleague hall te leaflet ase আর লিফলেটে এক্সপ্লেইন করে ডায়াবেটিকের ফুড খিলা প্লাস ডায়াবেটিক ফুড চেকে নার্সও করে ডাক্তারও গিয়ে যাইবাই ডাক্তারও ডায়াবেটিক ফুড চেক করে এভরিবডি হু ইজ এ ডায়াবেটিক দে গেট অটোমেটিকলি পুলড অফ ফ্রম জিপি টু চেক ফর ডায়াবেটিক ফুড পালস চেক করে স্কিন চেক করে টেম্পারেচার চেক করে এক্সেট্রা এক্সেট্রা সো অ্যাবসলিউটলি ইম্পর্টেন্ট এভরিবডি নানি at least once a year have a diabetic foot check. Save yourself, save your foot, because the amputation ratio in the United Kingdom is extremely high. So please, diabetic er foot te kono neglect korbai na. So E segment diabetic shesh, one part 2 segment hilo gari muscular skeletal problem of lower limb. Mane fire bedna ki, atur bedna. Tokhon এটা ওইলো গেরি important atur bedna fire. So I'll start off with both of them are expert in MSK. So I'll start off with Tousif with MSK. What are the most common problem or musculoskeletal problem of the lower limb and role of the podiatrist? Okay. Actually मैं ये चाहता हूँ कि इस सेगमेंट में आबिद भाई उर्दू बोलें और मैं इंग्लिश बोलता हूँ. ये सब हंसेंगे मेरे ऊपर अगर मैं उर्दू बोलूंगा ना सब हंसेंगे. I think you take the lead and I'll okay. Let's give it a try. I'll say it in English. Okay. So the most common musculoskeletal problems in the lower limb. So when we say lower limb, we'll talk about knees and we'll talk about ankle and feet. So we won't just talk about feet. Knees, obviously a lot of people can get osteoarthritis in the knees, especially as you get older, and we can talk about the reasons why and how to prevent this. It's very, very important, especially in our Asian community. And it's something that I see a lot. I've done this week, I must have done, I don't know, 5 or 6 injections in the knees of Aston Plus and Zeal, my 2 favorite injections. The foot and ankle, we see a lot of plantar fasciopathy, that means heel pain. Okay, very, very common, especially again in the Asian community. So if you wake up first thing in the morning and the first step you take out of bed, it's like somebody's just shot you in the heel. That's going to be plantar fasciopathy. So that's very common. You can also get pain in the Achilles. So that's the back of the ankle. Very common. Also, first thing in the morning, you'll feel a bit of pain. And then there are many, many other conditions. I could spend 2 hours talking about it. But if I was going to talk about the most common foot conditions, I would say in the knee, it would be osteoarthritis. In the foot and ankle, it would be heel pain and Achilles pain. Also, one more before I pass it on to my colleague Tousif. Pain around the big toe joint, the first MTPJ joint. Now you can get pain around that big toe joint for multiple reasons. You can get arthritis there. One of the things you'll find in the Asian community, especially I'm seeing young Asian guys coming to me with gout in this joint, is because we're eating too many slam burgers and too much biryani, right? It's really not good for you. So they're getting these gout attacks from a very young age, 35 years old, 40 years old, which is no age to be getting gout. Every time you have a gout attack, now a gout attack is your big toe will get red hot and swollen. You won't be able to put your foot on the ground. It will be so painful.
that's a gout attack. You need to visit a podiatrist, you need to visit your GP, have blood tests. But I would say these are the most common ones. Have I missed anything, Tousif? Thank you. So আমি basically আমার যে কলিগের এটা আমি নট সামান্য সামারাইজ করিলাই যে আমার কলিগে কইতো চাইরো কারেন্টলি না নিয়ে অনেক ইয়ংস্টার হলতে আইরো ক্লিনিকো তারা গাউট হচ্ছে বড় আঙ্গুলের হাড্ডিটা কি কুইকলি ফেলে যায় কিন্তু গাউট হয় বেশি অংশ স্পেশালি আমরার কমিউনিটি আমরার and especially from Muslim background আমরা বেশি মিট খাই বেশি রেড মিটে গাউটে এফেক্ট করে and in a wider community alcohol smoking it can affect gout but হে কইতো চাইরো যে রেড মিটে বেশি গাউট আর একটা আঁঠুর মাঝে ওইও বেদনা হইতে পারে আর্থারাইটিস তনি আর একটা বেদনা মোস্ট কমন বেদনা হইছে গেরি আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠমু উঠতে আমরা ফাড়া দিলে ফাওয়ের তলার মাঝে হিলের মাঝে বেদনা করে এটারে আমরা কই প্লান্টার ফাসিয়া রাইট এটা একটা কমন প্রবলেম আরো লিগমেন্ট প্রবলেম ব্লা ব্লা মানে আমরা যে প্রোগ্রাম অতটা কভার করতে নাই তখন আমার কলিগে গেছে যাইমু শর্টকাট কইরা আমার কলিগে উর্দুতে কিছু বুঝাইয়া কুইকলি summarizing in Urdu condition of the lower limb MSK. समझ भाई डॉक्टर साहब बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया जो मेरी क्लिनिक में भी जो मेन कॉम्प्लिकेशन जो आती हैं वो जोड़ों का दर्द नीज़ का भी आर्थराइटिस जो है जोड़ों का दर्द आता है जो बिग टो में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा उर्दू में उसको गैंठिया कहते हैं गाउट जो है वो बहुत कॉमन हो गया आजकल एड़ी का दर्द जो है वो नेचुरली जो मेरी क्लिनिक में सबसे ज़्यादा पेन के लिए लिहाज से पाँव में आता है तो वो एड़ी का दर्द आता है अगर मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में देखूं और मुझे इस तरह लगता है कि बिकॉज़ हमारे जो फुटवेयर सिलेक्शन है जूते जो हम पहनते हैं हम वो अच्छी चॉइस नहीं होती जिसकी वजह से क्या होता है कि आप की जो एड़ी है अगर आपका पाँव जो है वो फ्लैट फुट है या हाई आर्च है या इस तरह का पाँव है जिसके ऊपर आपकी जो प्लांटर फैशिया है उसको काफ़ी ज़ोर से जो है उर्दू में ये हंसी आएगी आपको खिंची लगती है और उसकी वजह से आपकी जो एड़ी है उसमें काफ़ी दर्द होना शुरू हो जाता है Thank you. Basically, in my layman language, I say, right, if the foundation of building is not correct, nothing above is correct. Exactly. So, আমি basically কই কি যে কোনো জিনিস বিল্ডিং এর ফাউন্ডেশন যদি কারেক্ট হয় না তো কোনো জিনিস সেম উইথ ফুট ফ্ল্যাট ফুট হাই আর্চ যেগুলা প্রবলেম করব এমনি প্রবলেম করব বিকজ ফাউন্ডেশন ইজ নট কারেক্ট সো now we're going to go into the treatment যে আমার কলিকলতে জিকাইমু যে ইটার treatment kita a simple treatment for musculoskeletal problem of the lower limb so I'll go to Abid bhai treatment wise I know zillions of treatment but 2 or 3 treatment we commonly do in our practice SOMUZ bhai, one of the main things that we need to talk about is in the Asian community. Yes, please. Let's talk about arthritis in the knee first. So what we know is if you've lost muscle as you're getting older in your legs and you're not doing any exercise, you're more likely to develop that arthritic type of pain in the knees. So doing a little bit of exercise is a good thing, all right? You need to, especially as you get older and in your 50s and 60s, and I'm not far away from that now. Unfortunately, age comes to all of us. So that doing a bit of exercise, lifting a bit of weight, it doesn't have to be too much, is a very good thing to prevent osteoarthritis in your knees. Regarding the foot and ankle, being flexible, so having flexibility in your calf, you should do a little bit of flexibility work. You can do calf stretches, many other types of stretches you can do to try and make sure your calves and your hamstrings are flexible. As Tousif said correctly, that wearing footwear that is appropriate can also be a form of treatment. Now let's talk about specific treatments. So we have exercise, and exercise is a treatment. Rehabilitation is a treatment. It's a very good treatment, and it's something that I think all patients should do. After that, there are other specific treatments that podiatrists and physiotherapists and doctors can help with. So injections
Now, there's multiple different types of injections. When we talk to Asian patients and we say injections, they get scared. They think, oh, it's going to be a steroid. It doesn't have to be a steroid. We can do herbal injections. Aston, which is like a jelly. I describe it like WD-40 for the joints. Very, very good. Gives it lubrication. Brilliant. And there are multiple other injections. So injections can be a treatment option. There's other things like shockwave treatment. Now, shockwave it's like almost like a drill that you're doing into the ground, but it's a specific machine that will cause a little bit of inflammation, break up scar tissue, and allow your body to come and repair the damaged structure. This class 4 laser is brilliant. Laser can work by something called photobiomodulation. Very long word, but essentially can be very effective. And finally, before I hand it over to SOMUZ MIAH, insoles and orthotics. So insoles and orthotics can be very good. Thank you. আমি সামান্য সামারাইজ করিলাই যে ট্রিটমেন্ট ওয়াইজ ইনজেকশন আছে মেনি টাইপ অফ ইনজেকশন স্টেরয়েড নন স্টেরয়েড ট্রিটমেন্ট আছে শকওয়েভ হইছে গেরি এক ধরনের মেশিন এটায় ভাইব্রেশন কইরা মানে খুবই পঞ্জন কইরা একটা জোদে আকি থেরাপিউটিক্যাল লাগানি তারপর লেজার লেটেস্ট টেকনোলজি লেজার আর orthotics is a medical device. It's not a magical device. Most of the podiatrists orthotic dibo prescription wise. So all kota treatment oil logari MSK. Therefore, aro treatment all ase medication ase. Ohan finally we are wrapping up everything now. I know time gone so quickly. So before we wrap up, I have a simple questions for Tousif. What are your recommendations? As you know, we are coming to the festival time. Yes. Christmas time, New Year's. What are the issue with the foot? समझ भाई अभी जो क्लिनिक में फेस्टिव सीज़न और सर्दी की वजह से जो चिल्बलेंस काफ़ी आ रही हैं जिसमें आपके जो पाँव हैं उनमें छोटे छोटे रेड स्पॉट्स बन जाते हैं तो वो काफ़ी इची पेनफुल और वो हो जाते हैं तो उसके लिए मैं अपने व्यूअर्स को ये कहूँगा कि आप अगर आपने सॉक्स पहननी है तो डबल अप सॉक्स पहनें जूते हमेशा पहन के रखें अपने पाँव को गर्म रखें उसके अलावा क्रीम रेगुलरली लगाएं पाँव को अपने पाँव का ख्याल रखें ताकि जो है विंटर में आपको ये प्रॉब्लम्स ना हो Thank you. Abid bhai, if you want to summarize it quickly, I know time passes. अच्छा SOMUZ MIAH Same with festival. ये होगा 1st of January आ जाएगी. Yeah. Everybody's going to look in the mirror. Oh, I'm too fat. I need to lose weight. I need to go to the gym. So New Year's resolutions, often people are trying to lose weight and they think, okay, I'm going to go. The first thing I'm going to do is get some trainers and go running. So don't go straight in 100 miles per hour. Do it slowly. Start walking first, then go to the gym. And you don't have to go on the treadmill and run straight away. Do it slowly. Finally, get the right shoes for the right activity. If you're running, don't get some fashion shoes. Get some running shoes and use the running shoes for your activity. That will prevent a lot of pain later on. Okay. Basically wrap up for realize one of the festive season, Christmas time or New Year time, তখন আমরা ফাউটা বেশি ব্যবহার করি তখন ইটারে ব্যবহার করতে গেলে এটা অনেক প্রবলেম জহরব কিন্তু কোনো জিনিস প্রবলেম করলে কোনো রাশ করবাই না সেম আমার দুই কলিগে করে যে রাশ কইরা কোনো জুতারে অত কুইকলি বদলাইবাই না কিছু ওয়েট তো কিছু আমরা গেইন হইব স্লোলি ওয়েটটারে কিছু কন্ট্রোল আনবাই এনিওয়ে before we leave a quick you got 1 minute to wrap up anything you want to say Abid, you got 1 minute. Thank you very much, SOMUZ MIAH, for inviting myself and Tousif. You're an inspiration to a lot of South Asian podiatrists and to me and Tousif. So I want to thank you for all the hard work you've done for our profession, personally, because you have paved the way for many other podiatrists. And I don't think me and Tousif would be where we are today if we didn't have your guidance. Well, without you lot, I am not nothing. I need people surrounding me. That's what make me boost my energy. Tousif, last and final, anything you want to say to audience? Remember, this is not only doing live, it will go throughout the world. Everybody sees from all walks of life, whether they're English speaking, Urdu speaking, Indian speaking, Bengali speaking, or Sylheti speaking. समझ भाई मैं उर्दू में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया
जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम आपको पिछले 10-15 साल से फॉलो कर रहे हैं और आपके फुट स्टेप्स पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और यू आर डेफिनेटली एन इंस्पिरेशन। और आपने हमें जो जिस तरह गाइड किया और जिस तरह आपने हमें सपोर्ट किया इस चीज़ में, एंड इवन रनिंग दिस, ये जो हमारे लिसनर्स हैं वो काफ़ी क्या लफ्ज़ इस्तेमाल मैं उर्दू में करूँगा कि वो खुशकिस्मत है कि ये जो नॉलेज है हम आगे पास कर सकते हैं, और अगर आप ना होते तो ये पॉसिबल नहीं है। Thank you for everybody. Thank you for everyone who is watching us throughout the world. যারা যারা দেখ रहा है আস্থা পৃথিবীতে সকলের হ্যাপি নিউ ইয়ার, আইরো নেক্সট সুন। আমরা যদি ভুল ত্রুটি করিয়া থাকি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবাই। Keep on watching Beyond TV. It's the community-based TV based in Birmingham, and this program is Health is Wealth. So life is healthy. Keep healthy. You'll be all healthy. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum. Goodbye. Accident and Injury Associates. No win, no fee. Make the right choice. One of the best service providers in the UK. 25 years of impartial service provider. Offers replacement vehicles nationwide. Complete accident management solutions. Contact us 07814 700 252, 0121 328 2929, or email accidentinjury@live.co.uk. বিয়ন্ড টিভি ইউকের উদ্যোগে হতে যাচ্ছে রান্না বান্নার বিশেষ প্রতিযোগিতা কুকিং চ্যালেঞ্জ 2025। 12 জানুয়ারি রোববার সন্ধ্যা 6টায় বার্মিংহামের আস্টনের ইকবাল বাংকুটিং হলে। থাকছে 4 ক্যাটাগরি: পিঠা, ভর্তা, মেইন ডিশ আর ডিজার্ট। প্রতিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়কে দেওয়া হবে আকর্ষণীয় পুরস্কার আর বিশেষ সনদপত্র। বিচারক হিসেবে থাকবেন ব্রিটেনের মূলধারার সেলিব্রিটি নানা শেফ। পুরো আয়োজন সরাসরি সম্প্রচার করবে বিয়ন্ড টিভি ইউকে। কুকিং চ্যালেঞ্জ 2025 এ অংশ নিতে আগ্রহীরা আজই যোগাযোগ করুন। ফোন 07889201811। বার্মিংহামে কুকিং চ্যালেঞ্জ 2025।